Hello and welcome to our program. We have some very special guests for you on the show today. At the helm of one of the largest and most respected navies in the world, please welcome the Chief of Naval Staff, Admiral R.K. Dhawan, and his lovely wife, Mrs. Meenu Dhawan. Welcome to the program, the first couple of the Indian Navy. Well, thank you very much. It's a pleasure to be on Doordarshan and to have the opportunity through you to interact with the citizens of our great country. Our pleasure too. Starting with you, Admiral Dhawan, when did you decide that you really wanted to be a man in uniform for the most active part of your life? Well, I must say that when I was studying in school, my ambition was to be a doctor. And when I passed out of school in December '69, I actually joined the pre-medical in Delhi University. Okay. All set to be a doctor. But somewhere there was a twist of fate and destiny, because I had appeared for the ND exam, and when the results were out and my SSB board results were out, I had the option to make. And this is where my father said that he could guide me, but the decision had to be mine. So there was a pile of book at one end and the naval career at the other, and I chose the Navy and never looked back. What drew me to the Navy? What was the call of the sea that came? And here I realized many years later that we are all tied and connected to the oceans, because we all have in our blood the same exact percentage of salt in our body, which is the same percentage of salt in the oceans. Therefore, we are all tied and connected to the seas. So whenever you go back to the seas, whether it's to sail on it or watch it, you get the feeling of going back where you came from. So perhaps there was a call, because I was in Bombay in my younger days, in the initial years, and when I filled the form for the NDA, I ticked Navy as my first choice. Okay. And that's how I landed in the Navy. You know, I've always heard about this lure of uniform, about how uniformed men get the loveliest of ladies as their better halves. I can understand that you had this lure of the uniform for yourself. But Meenuji, what drew you to this gentleman in uniform? Oh, like he said, he wanted to be a doctor, and my mother was very keen for me to get married to a doctor. Okay. But it was not to be, and it was my father's decision that he really was very, very impressed with him at the first meeting only. And he was, and that's how it went. I said, okay, I go with my father's choice. And of course, they did ask me if I was okay with the boy, and I said, yes, why not? And well, I don't regret it at all, even though he's not a doctor. Okay, so it's a loss for the medical profession, but a huge gain for the Indian Army, absolutely. Yeah. So आपने जब बात की कि जो नमक की परसेंटेज होती है पानी में और हमारे खून में, तो पानी से तो एक बहुत गहरा रिश्ता होगा आपका, कैसा है वो? बहुत लंबा और गहरा रिश्ता है, तकरीबन 40 साल से ज़्यादा, और इस पीरियड में बहुत मौके मिले हैं। दुनिया के जितने सागर हैं, जितने महासागर हैं, उनमें सेल करने का, और बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये एक चुनौती है। और जब आप एक सेलर होते हैं, जब आप एट सी होते हैं, तो जो आपको जोश आता है काम करने का, और लहरों पे जब आप एक शिप के कैप्टन होते हैं, उसका जो एक्सपीरियंस है वो कुछ अपना अलग ही एक्सपीरियंस है। So I've had the experience of sailing different parts of the world, sailing my ship on my own. One of my first experiences way back in 1978, हमने एक शिप कमीशन किया था रीगा में, जो कि तब सोवियत यूनियन में था, बाल्टिक सी में। वहाँ से हम जहाज़ लेके आए थे गिडीनिया, पोलैंड में, नॉर्थ सी से होते हुए इंग्लिश चैनल में, जिब्राल्टर से फिर लाहौर में आए, फिर टूनीसिया में सुएज़ कनाल पास किया, पोर्ट सुडान में आए, एडन में आए और बॉम्बे आए, और 62 डेज़ का पैसेज था। और वो दिन जीपीएस के डेज़ नहीं थे, हमें एक्चुअली स्टार्स से नेविगेशन करना पड़ता था। तो जब हम बॉम्बे पहुँचे आफ्टर 62 डेज़,
I felt like Christopher Columbus. Wow. And navigation expert, I think that's your Yes, field also. that's- हमारे देश की अपनी मिट्टी की एक खुशबू है, याद आती है जब बाहर जाते हैं. तो कोई पानी की भी खुशबू होती है? पानी की कई खुशबू होती हैं और डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे, सवेरे से लेके एक तो रंग जो आउट एट सी होते हैं, अलग अलग रंग आते हैं. बिकॉज जब रात को तारे दिखते हैं, इतने क्लियर आसमान मैंने आज तक धरती से नहीं देखे जितने अपने समुद्र से देखे हैं. दूसरी बात, जब सूर्य उदय होता है, सनराइज होता है, जी. उसके साथ जो पानी की लहरों पे अलग अलग रंग आते हैं, वो बिल्कुल ही अलग होते हैं. और जब सनसेट हो रहा होता है शाम को, इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस. और साथ ही साथ जो सी ब्रीज की स्मेल होती है, दे से दैट द सॉल्ट इन योर हेयर एंड द सी ब्रीज इन योर हेयर, it's a different experience and different smell. So that is very, very different from anything that you can experience. Wonderful. Meenu ji?